Hello friends, in this video we will discuss about protoplast isolation. First of all, what is protoplast? A cell without cell wall but bounded by plasma membrane is called protoplast. सेल वॉल को रिमूव कर दें तो सिर्फ प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा. प्रोटोप्लास्ट क्या है? एक ओरिजिनल सेल विदाउट सेल वॉल. यानी कि प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आएगा? सेल वॉल हटा दिया जाए तो बाकी सारी चीज लाइक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स. The term protoplast was first introduced by Hans Steen in 1880 to designate the living matter enclosed by plant cell membrane. Now, isolation of protoplast. The isolated protoplast is unusual as the outer plasma membrane is totally exposed and is the only barrier between the external environment and the interior of living cell. There are two different methods for isolation of protoplast. First is mechanical methods. Second, enzymatic methods. Now, enzymatic method is further divided into two methods. First is sequential method and second is direct method. First, we will talk about mechanical methods of protoplast isolation. In 1892, Klicker first time used the term mechanical methods of protoplast isolation. अब हम लोग समझेंगे मैकेनिकल मेथड क्या है प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट टिश्यू लेते हैं, फिर प्लांट टिश्यू के सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड करते हैं. उसके बाद माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं उस सेल को. फिर फर्दर हम सेल वॉल को कट करते हैं नाइफ के हेल्प से. देन रिलीज ऑफ प्रोटोप्लास्ट. सेल वॉल निकालने के बाद प्रोटोप्लास्ट को हम अलग कर लेंगे एंड लास्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. ये है मैकेनिकल मेथड्स फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन. However, this method is generally not followed because of certain disadvantages. Yield of protoplast is generally very low. Protoplast from less vacuolated and highly meristematic cell do not show proper yield. This method is time consuming and laborious. It is confined to certain tissues which have large vacuolated cells. The mechanical method is useful when there are side effects of cell wall degrading enzymes. Now, our next method is enzymatic method of protoplast isolation. In 1960, Cocking first time used the term enzymatic methods of protoplast isolation. He exhibited the possibility of enzymatic isolation of protoplast from higher plants. इन्होंने concentrated solution of cellulase को यूज किया सेल वॉल्स को डिग्रेड करने में. Later, in 1968, Tekiv for the first time employed commercial enzyme preparation for isolation of protoplast and subsequently regenerated plants in 1971. Protoplasts are now regularly isolated by treating tissues with a mixture of cell wall degrading enzymes in solution, which contain osmotic stabilizers. The relative simplicity with which protoplast isolation can be achieved relies upon a variety of factors which have been discussed below. Physiological states of tissue and cell material. प्रोटोप्लास्ट को हम लोग आइसोलेट करते हैं वैरायटी ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन इंक्लूडिंग लीव्स, पेट्यूल्स, शूट एपिक्स, रूट्स, फ्रूट्स, कॉलियोपेटाइल्स, hypocotyls,
stem, embryos, microspores, callus, and cell suspension culture of a large number of plant species. Leaf tissue is preferred क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स को अलाउ करता है आइसोलेशन के लिए विदाउट किलिंग द प्लांट्स. मोरेओवर मेसोफिल सेल्स लूजली अरेंज्ड रहता है और एंजाइम ईजिली एक्सेस करता है सेल वॉल को. देन लीफ आर टेकन स्टेरिलाइज्ड एंड लोअर एपिडर्मिस फ्रॉम द एक्सेस्ड लीफ इज पील्ड ऑफ. फिर हम लोग इसको स्मॉल पीस में कट कर देते हैं और फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट के लिए. नाउ एंजाइम्स. आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट लार्जली डिपेंड करता है नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स यूज्ड टू डाइजेस्ट द सेल वॉल. 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स है सेल वॉल का विच आर टर्म्ड एज सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन सब्सटेंसेस. Cellulose and hemicellulose are the components of primary and secondary structure of cell wall respectively, while pectin is the component of middle lamella that connects the cells. Pectinase mainly degrades करता है middle lamella, while cellulase and hemicellulase are need to digest the cellulosic and hemicellulosic components of the cell wall respectively. Cellulase R10 frequently use किया जाता है wall degradation में. The other enzyme glycylase has both cellulolytic and pectiolytic activities and has been successfully used alone for isolation of protoplast from cultured cells. And there are many more enzymes which we used in protoplast isolation I have mentioned here. The enzymatic isolation of protoplasts can be performed in 2 different ways. First is 2-step or sequential method. Second is 1-step or direct method. First of all, we will discuss about 2-step और sequential method. इस मेथड में सबसे पहले हम लोग टिश्यू को मैसिरोसाइम और पैक्टिनेज एंजाइम से ट्रीट करते हैं. फिर सेल आइसोलेट होता है बाय डिग्रेडिंग मिडिल लैमेला. फिर हम लोग इस फ्री सेल को सेल्यूलेज से ट्रीट करते हैं और वो प्रोटोप्लास्ट को रिलीज करता है. और इन जनरल द सेल्स आर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट एंजाइम्स फॉर शॉर्टर पीरियड्स. नाउ आवर सेकेंड एंजाइमेटिक मेथड इज 1-step और डायरेक्ट मेथड. इस मेथड में सबसे पहले हम लोग टिश्यू को प्लेस्ड करते हैं मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स in a 1-step reaction which consists both macrosome and cellulase. 1-step method हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये less laborious है. During the enzyme treatment, the protoplast isolated need to be stabilized because the mechanical barrier of cell wall which served as support has been broken. इसी कारण से हम लोग ऑस्मोटिकम को ऐड करते हैं. वो प्रिवेंट करता है प्रोटोप्लास्ट को ब्रस्टिंग से. दिस इज ऑल अबाउट एंजाइमेटिक मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट. फर्स्ट स्टेप है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का सेल वॉल को डेवलप करना अराउंड द मेम्ब्रेन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट. This is followed by induction of divisions in the protoplast derived new cell giving rise to a small colony. This is followed by induction of divisions in the protoplast derived new cell giving rise to a small cell colony. Isolated protoplast और hybrid cells को हम लोग कल्चर करते हैं either in a liquid और
agar medium. Common practice of using a liquid culture medium includes either incubating protoplast or heterokaryons in a thin layer or a small drops of nutrient medium inside a petri dish, which in turn is covered by another petri plate and finally sealed with parafilm. The culture dish is then maintained at low light or dark conditions at 25 degrees centigrade to 28 degrees centigrade. Now, next is protoplast fusion. Plant protoplasts represent the finest single cell system that could offer exciting possibilities in the field of somatic cell genetics and crop improvement. Next is protoplast fusion. Plant protoplasts represent the finest single cell system that could offer exciting possibilities in the field of somatic cell genetics and crop improvement. Protoplast fusion can be used to make crosses within species is called intraspecific, and protoplast fusion can be used between species is called interspecific, and protoplast fusion within genera is called intrageneric, and between the genera is called intergeneric. Number of methods have been used to induce fusion between protoplasts of different strains and successful results are obtained. Now, protoplast fusion may be of three kinds. First is spontaneous fusion. Second is mechanical fusion. Third is induced fusion. In spontaneous fusion, the adjacent protoplasts in enzyme mixture have tendency to fuse together to form homokaryons. Now, what is homokaryon? Homokaryon is the term used for having same type of nucleus. Second is mechanical fusion. Gentle tapping of protoplast in a depression slide results in protoplast fusion. The gained protoplast of Acetabularia have been fused mechanically by pushing together two protoplasts. This fusion does not depend upon the presence of fusion-inducing agent. Third is induced fusion. Freshly isolated protoplast can be isolated to undergo fusion with the help of range of fusogen, example NaNO3, and artificial seawater. This is all about today's topic, isolation of protoplast. Thank you.